Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, in today's class, we will be discussing some more things about volcano, and then we will jump straight towards our next topic, that is rocks. So, थोड़ा जल्दी से बना लेते हैं वर्ल्ड मैप because we will be discussing the four main location where volcanoes are situated. ये बन गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका. सो ये बन गया हमारा बहुत ही ज़्यादा रफ मैप. ठीक है, बाद में कभी अच्छा बना लेंगे. अभी इसी को देखिए. एंड हियर इज अवर ऑस्ट्रेलिया और नीचे एंटार्क्टिका, बट वी डोंट नीड द मैप ऑफ एंटार्क्टिका फॉर नाउ. So we are discussing about the locations, the prime locations of the volcanoes. So the first thing that is relevant in case of earthquakes also. तो कौन सी थी? Yes, the Pacific Ring of Fire. So here is some Pacific Ring of Fire where you will find most of the volcanoes. Bypassing Australia. So this is the first prime location where you will find most active volcanoes. The second one is quite important and ये new concept भी है. So here we will start from our Pamir Knot range. So here somewhere around Central Asia, अफगानिस्तान के थोड़ा सा और ऊपर. ठीक है, तो वहाँ हम कहीं देखेंगे हमारे पामिर नोट्स. नाउ दीज नोट्स आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माउंटेन रेंजेस इमर्ज. सो लाइक इन द केस ऑफ पामिर नोट वी हैव हिंदू कुश रेंज,
सुलेमान रेंज, काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज. सो दीज सेट ऑफ माउंटेन्स इमर्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर नॉट. एक और हम नॉट यहाँ बीच में देखेंगे यूरोप में, बाद में देखेंगे. सो डेट इज अनदर नॉट नोन एज आर्मेनियन नॉट. अंडरस्टूड. सो हियर वी हैव काराकोरम, वी हैव कैलाश रेंज टुवर्ड्स इंडिया, एंड सेकंड इन पाकिस्तान वी हैव द हिंदू कुश as well as Suleiman range. Then these range will go forward inside the European plate. Here in Iran the upper portion is Elbrus. देखते रहिए अपने मैप में, मैप खोल लीजिए, बताना भूल गया, मैप खोल लीजिए. प्लीज ऑलवेज हैव योर मैप्स इन फ्रंट ऑफ यू वाइल रीडिंग ज्योग्राफी. एल्ब्रूस ऊपर की रेंज ईरान में देखने को बोल रहा हूँ मैं, ईरान में देखिए ऊपर की रेंज है एल्ब्रूस, जो आगे जाके टर्की में बन जाएगी पॉइंटाइन. नीचे की रेंज है जैग्रोस या टॉरस होगा, देख लेना, और आगे जाके बन जाएगी टारोस. पॉइंटाइन एंड टारोस इज इन वेयर? यस, टर्की, एंड दिस इज इन ईरान. तो अच्छे से देख लेना. देन और भी आगे जाएंगे, लाइक इन ग्रीस वी हैव पिंडूस माउंटेन्स. देखते रहिए, ग्रीस वी हैव पिंडूस माउंटेन्स. इन इटली वी हैव पेनेनाइंस. वी हैव पेनेनाइंस माउंटेन रेंज. देन इन बिटवीन स्पेन and France, yes, I think I am right. In between Spain and France, in the Iberian Peninsula, we have Pyrenees. तो ये देख लीजिए, ऊपर हमें एल्प्स मिल जाएंगे, यहाँ कारपेंथियंस मिल जाएंगे, ट्रांसल्वेनियंस मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारी रेंजेस है, तो आप देख लीजिए. सो दिस इज नोन एज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट. In mid-continental belt, we will find the second most active zone of volcanoes. The third is we have discussed in our divergent plate boundary. So which volcanic feature we can observe in the divergent plate boundary? Yes, if you are revising your notes, we have mid-oceanic ridges. कैसे होती है? When two continental plates will diverge from each other. So hence the molten magma from inside the earth by the help of convectional cells will come out, thus forming ridges on both sides of the plate boundary known as mid-oceanic ridges. So that is the third most. And the last is the hotspots. ठीक है, तो hotspots are such ranges, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, we have in Pacific the Hawaiian Islands. Here we have our Mauritius Island. Then here we have our Reunion hotspot. So these are some standalone hotspot from where after cracking the crust part the molten magma emerges. तो अंडरलाइंड वर्ड क्या है? स्टैंड अलोन होता है ये. अंडरस्टूड. बट एज द प्लेट्स आर नॉट स्टेबल, सो इधर उधर 3-4 आपको आइलैंड रेंजेस दिख जाएंगी. अंडरस्टूड. सो जैसे हवाईयन हो गया, इधर मॉरिशस हो गया, यहाँ रियूनियन हॉटस्पॉट हो गया. यू विल रिकॉल दिस रियूनियन हॉटस्पॉट फ्रॉम आवर प्रीवियस क्लासेस. विच क्लास? In that class where we have studied that our Indian subcontinental plate started drifting towards this Eurasian plate, है ना. तो उसमें हमने ये reunion hotspot पढ़ा था. As a resultant of this reunion hotspot, we are experiencing a common feature in our peninsula India known as Deccan lava plateau. So these are 4 major zones. आपने लिख लिए होंगे. The first is Ring of Fire, the second is Mid Continental Belt, जो मैंने अभी पूरी आपको एक्सप्लेन की, और यहाँ भी आगे जाके अंडमान यही हमारे माउंटेन रेंजेस बनाते हैं. हम फ्यूचर क्लासेस में ये सब पढ़ेंगे. Then third is Mid Oceanic Ridges and the fourth one is the standalone hotspots. So these are the 4 major zones. अच्छा, in the mains question, अगर मेंस क्वेश्चन में ये आ जाए, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ वॉल्केनोस और हाउ
कैनोज आर फॉर्म्ड। अगर ऐसा कुछ आपके पास आ जाए, या व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस, तो आप क्या लिखोगे उसमें, थोड़ा सा सोच लो। So the main question is explain the mechanism behind volcanic eruptions। मान लीजिए ये आ गया, so what will you write? Volcanic eruption का mechanism बताइए। You will start from the cause। So if you write in this manner, you will be able to fetch maximum number of marks. The question is, please explain the mechanism of volcanic eruption. Please touch upon each and every point of these major points. So first is the cause. So you will start from cause. I am telling you how you can contemplate in the mains answer writing. अगर आपको कुछ भी नहीं पता, मैंने बस आपको थ्योरी पढ़ाई है, and till this time you know only theory, but this theory has to be written down on a piece of paper in a limited number of words. So आप कैसे स्टार्ट करोगे? अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, वॉल्केनिक इरप्शन सुनते ही आपको समझ आना चाहिए, yes there should be a cause of volcanic eruption. The cause of the volcanic eruption is the heat trapped inside the earth's crust. So cause क्या है? The heat that is trapped inside the earth's crust. This heat that is trapped in the earth's crust want to release its pressure. How can it release the pressure? Via the convectional cells. So this enormous amount of heat will penetrate the earth's crust via the convectional cells or emerging limbs of convectional cells, thus forming volcanoes and volcanic type features. Types and resultants. Volcanic eruptions can be attributed to two types. The first one is regarding the convergent plate boundaries, and the second is divergent plate boundary. In the convergent plate boundary, आपने पढ़ाई होगा कि क्या होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो हम बस मेंस का आंसर डिस्कस करते हैं। बाय द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, व्हेन ओशनिक crustal convergent collision is taking place, hence we will find that the resultant volcanic eruptions are violent. In the divergent plate boundary, we will tend to experience the very not cool, but layer-like formation. Layer-like formation of the volcanoes. Example क्या है? Plateaus, islands. इनमें भी islands बनते हैं, बाद में देखेंगे हम. Mid-oceanic ridges. So in the convergent plate boundaries, we have explosive volcanoes. In the divergent plate boundary, we have a peaceful volcanic eruptions that tend to be spread in number of layers or in a large amount of area. So plateaus, islands and mid-oceanic ridges. So we have talked about the types as well as resultant part of volcanic eruptions. Then the major areas that I have told you. The first one is the Pacific Ring of Fire. The second one is the Mid-Continental Belt. The third one is
the mid-oceanic ridges, and the fourth one is the standalone hotspots. So these are the four major regions where we can experience a huge amount of earthquake. The point here to be mentioned, worth to be mentioned, is there are no volcanism in Himalayas. Apart from this main question, I am revising you that there is no volcanism experienced in case of Himalayas. Why? Because we have not subduction of plates but abduction of two continental plates. That's why we tend to not experience the phenomena of volcanism in case of Himalayas. Then climate change. You can write some 2 to 3 lines about climate change and how volcanic eruptions are affecting the climate. So you can write that volcanic eruptions results in short-term global cooling but long-term global warming. What is the meaning of this statement? I have told you during the volcanic eruptions, the number of particles and gases will emerge out from the volcano. Now in this part, the gases part, we have various gases like SOx, NOx, then carbon dioxide, mercury. So some small amount of gases will emerge out from the mouth of the volcano. So this sulfur part, when this sulfur is thrown out in the air by the volcanoes, it is an aerosol, and aerosols have the property to reflect back the sunlight in the sky. So that's why the volcanic eruptions tends to result in short term global cooling. एल्बीडो घटा दिया, जो भी लाइट आ रही थी वापस भेज दी ऊपर स्काई में, है ना, स्पेस में. So short term global cooling, but CO2 is also has also been released in large amount. So long term global warming. So volcanic eruption ये cause करता है. Understood? Volcanic eruptions are not the modern phenomena but the age-old phenomena. Volcanic eruptions has also contributed to the mass extinctions. So these small lines that you will be putting in your answers, they will enhance your answer. तो समझ में आ गया? You have to tackle this question in this type of manner. अच्छा, प्लीज़ ड्रॉ स्मॉल डायग्राम्स ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. या तो आप एक ही डायग्राम में दोनों डायग्राम को मिक्स भी कर सकते हो, मर्ज भी कर सकते हो. कैसे? इफ़ हेयर यू आर ड्राइंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो यहीं दो लैंड के एरिया शो करके आप कर दीजिए वहाँ कन्वर्जेंट. एक जगह डाइवर्जेंट है, दूसरी जगह ऑफकोर्सली देयर इज़ अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. सो प्लीज़ मेक अ स्मॉल डायग्राम इन दिस मेन्स क्वेश्चन ऑल्सो. अच्छा, अगर UPSC आस्क्ड यू directly upon the climate change that how volcanic eruptions are causing or a concern for climate change, then how will you write? The UPSC has directly asked you about the effect of volcanic eruption on climate change. So there are various things that you can write. The first one is of course global warming. वेरियस GHGs हैव बीन रिलीज, तो उनसे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगा. देन द फ्रेज आई हैव टोल्ड यू, शॉर्ट टर्म ग्लोबल कूलिंग, मोर नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ एरोजोल्स इन द एयर, सो लेस एल्बिडो. एल्बिडो क्या होता है? मैंने बता रखा है, नहीं बता रखा तो कोई दिक्कत नहीं है. सो जितनी भी सनलाइट आएगी अर्थ के ऊपर, मोस्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ एरोजोल्स. अंडरस्टूड? सो शॉर्ट टर्म ग्लोबल कूलिंग हो जाएगा. देन ऑफ कोर्सली
pollution, then aids in melting of ice caps, then also increase in CO2 will leads to ocean acidification. So these are number of effects that can be seen in the environment if there is continuous major eruptions is taking place. ठीक है. सो क्लाइमेट चेंज पे इतने सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो एंड द मैक्सिमम वर्ड्स दैट यू कैन राइट इज 150 to 250. सो प्लीज एलैबोरेट दिस पॉइंट, हैव योर good crisp short introduction, then this is the body part, and then at the last you can conclude. In the environment section we will see some of the modern engineering technologies, green technologies, via which we can not stop but we can de-escalate this climate change. तो क्या है वहीं पढ़ेंगे, shooting mirrors in the sky, spraying aerosols in the air, है ना, cirrus cloud thinning, तो ये सब हम उसमें पढ़ेंगे. Now we will be coming to our next topic, that is rocks. What are rocks? Rocks are nothing but the aggregation of minerals. ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स है. अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल, या कुछ भी बोल लीजिए, मेटल तो नहीं होगा पर मिनरल इन द अर्थ क्रस्ट, सो क्रस्ट में किसकी सबसे ज़्यादा अबंडेंस है, दैट इज सरप्राइजिंगली O2. देन वी हैव Cl, सिलिकेट, देन Al, एल्यूमिनियम, एंड देन सो ऑन. ठीक है, आयरन, देन लास्ट में मैग्नीशियम. बट इन ओवरऑल अर्थ which is mostly abundant, that is nothing but iron. There can be two types of rock, hard rock and soft rocks. Hard rocks are those rocks which are very resistant to the external forces, like igneous and metamorphic rocks, while some other rocks are very soft in nature. It means they tend to get deformed when external pressure is applied, like sedimentary rocks. So these three types of rock we will study now: igneous, sedimentary and metamorphic. In the previous classes I have told you the words intrusive, endogenic, extrusive, exogenic. So intrusive means things are forming inside the crust or inside the earth. Extrusive means things which are forming outside the crust. ठीक है. Now there is another variable, that is rate of cooling. आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? If the rate of cooling is slower, what happens to the development of crystals in a rock? If the rate of cooling is slower, it means we have more crystals. If the rate of cooling is faster, we have small or no crystals. Now how rocks are formed? Rocks are basically formed by the molten magma. The magma which is coming out of earth via these volcanic eruptions, that magma will tend to solidify on the earth's crust, hence forming rocks. If this magma is solidifying inside the crust, it is known as intrusive rocks. If this particular molten magma will come out of earth's crust and then will solidify, it is known as extrusive rocks. When the molten magma is coming out, it means extrusive rocks. उसमें rate of cooling faster हो या slower?
ऑफकोर्सली फास्टर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें स्मॉल और नो क्रिस्टल्स, द आंसर इज बासाल्ट। If the molten magma is solidifying inside the crust, it means intrusive. इसका मतलब है there will be the rate of cooling will be slower. It means more crystals, large crystals. ठीक है, granite and gabbro are examples. Understood? Now there can be further subdivisions of this intrusive like hypabasal and plutonic, but I don't think we have to go in that much of depth. So rate of cooling we have studied and the composition of earth crust we have studied. Actually, there is a rock cycle taking place on and inside the earth. So igneous rock can be changed into sedimentary. Igneous rock can be changed into metamorphic. Metamorphic rock can change into igneous. ठीक है ना? So everything is interrelated. All these three forms of rocks. Igneous rock. The molten magma is coming out. कोई दिक्कत नहीं है इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव की. द मोल्टन मैग्मा इज कमिंग आउट एंड सॉलिडिफाइंग. इट मीन्स these are the primary rocks that will be formed after solidification. The magma which is coming out of Earth's crust has such a huge temperature. So आपको लगता है कि is there anything left inside the particles of that magma? So no. So we don't find any fossils inside these igneous rock. There will be huge amount of magma coming out, and also there will be a tube which is supplying this particular magma, huge amount of magma. So that's why these will come in large aggregations. So these are some of the properties of igneous rocks. These are hard rocks, I have told you. So these are some of the properties of igneous rock. Now the second part, sedimentary rocks. These are known as soft rocks or stratified rocks. The crystals has been arranged in certain particular form. जितने भी छोटे छोटे crystals होंगे या band of particular rock structure will be arranged in a particular form. That's why it has been called stratified. यहाँ एक particular मिट्टी है, फिर यहाँ दूसरी मिट्टी है, इन दोनों को external pressure लगा के compact कर दिया. It means it has become a single rock. So आपको अच्छे से layers दिख पाएंगी कि yes it has been stratified. So that's why sedimentary rocks are called stratified rocks. How these sedimentary rocks has been formed? From the primary rocks, all the rock types can be formed. These primary rocks, by the external agents, will get cut down into smaller pieces. These smaller pieces, by the agents of erosion, can distribute in different regions of the world. तो कहीं कहीं जाके ये सेटल हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, एंड दस बाय द रिजल्टेंट ऑफ द प्रेशर this will turn into rocks known as sedimentary rocks. That's why it has been called soft rocks, stratified rocks. Agents of erosion will took the particles of soil, dirt, then पत्थर, इन सबको ले जाके they will distribute it in particular place. मान लीजिए एक जानवर आके उसके बीच में मर गया, so agents of erosion तो अपना काम करते रहेंगे. It means they can contain fossils, and in fact they contain fossils.
और इन्हीं को बोला जाएगा बाद में फॉसिल फ्यूल्स। द रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स इज नोन एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज since decades they are compacted under those high pressure conditions, though so they are turned into petroleum as well as coal. Understood? Soft rocks, stratified rocks, fossils मिलते हैं, small aggregations में पाए जाते हैं, ये भी लिख लीजिए. So this is our sedimentary rocks. इतना एब्जॉर्ब कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. For prelims, 2 to 3 more points. Primary rocks or igneous rock, hard rocks, so they are impermeable. लिख लीजिए ना, impermeable in nature. It means indirect correlation अगर हम निकालें तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आगे सुन लीजिए. Sedimentary rocks, soft rocks, it means permeable. It means if UPSC gives a statement that wherever there will be aggregations of sedimentary rocks, we will find groundwater there. It is correct or not? Yes, it is correct. Why? Because sedimentary rocks are permeable in nature. That's why wherever you will find huge amount of sedimentary rocks, it means there is ample amount of groundwater available under it. अगर आपको यूपीएससी में स्टेटमेंट दे दिया कि क्रिस्टल के साइज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ, सो लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रिस्टल कहाँ होंगे? आई हैव टोल्ड यू the extrusive igneous rock, that is basalt. Then intrusive में दो आ जाएंगे. The first is gabbro, which is a subtype of intrusive hypabasal, and the largest crystals in granite, which is plutonic. So अगर आपको यूपीएससी में आ गई तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इन ग्रेनाइट. क्यों? बिकॉज लोवेस्ट, यहाँ लिखा था हमने, लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग है वो. जहाँ लोवेस्ट रेट ऑफ कूलिंग है वी टेंड टू फाइंड लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स. इन सेडिमेंट्री रॉक्स आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. क्या होते हैं? इग्नियस रॉक के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे, वो कहीं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाएंगे. ऐसे ही एजेंट्स ऑफ इरोजन, ये सारे पार्टिकल्स धीरे धीरे दूसरी जगह पे ले जाके वहाँ डालते रहेंगे. बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस इट विल गेट कॉम्पैक्टेड, हैंस फॉर्मिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज लिथिफिकेशन. ठीक है, लिथिफिकेशन बोलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स को. सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स लिख लीजिए. So these are the examples of sedimentary rocks: sandstone, clay, shale. जो हम shale gas, shale aggregation की बात करते हैं वो क्या है? That is a sedimentary rock. Loess. क्यों ये मैंने साइन लगाया? Because it is defining the fineness of particles. Loess has finest number of particles. This is kind of limes. ठीक है. देन शेल के, क्ले के एंड सैंडस्टोन के सबसे बड़े हैं. बट ऐसे तो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा हाँ लोएस्ट के सबसे फाइनर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ होगी. बट इट गोज द अदर वे राउंड ऑल्सो. हाउ? रियल एग्जाम्पल, मंगोलियन डेजर्ट also known as Gobi Desert is a yellow desert. Yellow sand is present there. Due to the agents of erosion, this particles of yellow sand is carried to some portion of China, basically the central eastern portion of China, and get deposited there. Coincidentally, one particular river known as Huanghe passes from there. Due to the deposition of this yellow sand, this river has turned yellow. Hence, the other name of Huanghe is the Yellow River.
Now this yellow river is draining into I think East China Sea, है ना, हाँ ईस्ट चाइना सी होगा, thus making a small portion of that drain yellow in color. Hence you will also find yellow sea over there. अपने atlas में देखना, ठीक है. So you will find a small portion of the East China Sea as yellow sea. Now China become furiated with this. Why? Because the more you get the fineness of the particles, the more that area will belong to the badland topography. जितनी हमारे पास पार्टिकल्स की फाइननेस आ जाती है उतना ही वो पर्टिकुलर रीजन अफेक्ट होगा बैडलैंड टोपोग्राफी से. व्हाट इज बैडलैंड टोपोग्राफी? द टोपोग्राफी द रीजन विच इज प्रोन टू हाई इरोजन, विच हैज हाई पोटेंशियल ऑफ इरोजन. आपने ये बहुत अच्छा डायग्राम बहुत बार देखा होगा, इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. गली रेवाइंस, इसका भी कुछ नाम था से, आई एम फॉरगेटिंग इट राइट नाउ. सो दिस इज बैडलैंड टोपोग्राफी. अ स्मॉल क्रैक हैज बीन डेवलप्ड. रिल, yes, rill. The small crack or the small erosion has been developed in the topography which contains the sedimentary region or most importantly the lowest region. So agents of erosion ने थोड़ा सा erosion कर दिया, making it the rill. अब एक बार क्रैक डेवलप हो गया तो वहाँ से erosion continuous होता रहेगा. So then it will convert into gully, the larger amount of cracks, and then it will convert into ravines. कहाँ हमने देखे हैं रेवाइन से बड़े बड़े? यस, चंबल के डाकू. दे यूज दीज रेवाइंस टू हाइड फ्रॉम पुलिस. तो चंबल के डाकू इन एमपी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द igneous and sedimentary rocks. Now we will jump to the metamorphic rocks. Now China got furiated on this particular badland topography that has been created by loess. So China dredged out all the loess from beneath the Huanghe River and thus making the largest dam of the world known as Three Gorges Dam. Understood? As I have told you, these are also known as hard rocks. Why? Because sedimentary or igneous rock which has undergone tremendous amount of temperature and pressure will get converted or will get metamorphized into these particular rocks. अब मैंने यहाँ high temperature, extreme temperature and pressure की बात की. It means as igneous, no fossils. But due to the impact of the external pressure, huge amount of extreme amount of temperature and pressure, these will get converted into such type of materials which are of high economic value, like bituminous coal that I have told you will get converted into the purest quality of coal, that is anthracite. शेल शिस्ट बन जाएगी. लाइमस्टोन मार्बल बन जाएगा. कार्बन डायमंड बन जाएगा या तो ग्रेफाइट बन जाएगा.
So these are some examples of metamorphic rocks. Foliated rocks means the crystals are arranged in a band. It means if this is the rock and these are the crystals, after the process of metamorphication, these particular crystals will get arranged in particular bands. So hence these are called foliated rocks. No fossils will be present here. Acha, if I quote you indirect question, in which region you will find the maximum amount of groundwater? There are four options are Himalayas, Meghalaya, Peninsula, and Delhi. So what will be your answer? Yes, the concept of rocks will be applicable, जो कि मैंने अपने promotional वीडियो में डाला है कि such type of indirect questions can be asked. जैसे वो अरावली रेंज वाला पूछ लिया था ना, oldest fold mountains. So the answer here will be Delhi because of the Great Plains region. Great Plains means alluvial soil हो जाएगी वहाँ, ठीक है, permeable in nature, sedimentary rocks ज़्यादा मिलेंगे वहाँ. So there will be ample amount of groundwater available there in comparison to this. हिमालयाज में तो रॉक्स ही इतनी बड़ी, ज़्यादातर मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स मिलेंगी. क्यों? बिकॉज ये वाली रॉक्स मिलेंगी क्यों? क्योंकि माउंटेन के नीचे ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है. जितने भी ऊपर ब्लॉक खड़े हैं वो एक नीचे ज़मीन के ऊपर ही तो खड़े होंगे ना, और वहाँ हमारे पास जो भी सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक है that is undergoing huge temperature and pressure. That's why we will tend to find large aggregation of metamorphized rocks under the mountains. Peninsular plateau आपको सबको पता है, plateau है. मेघालय is the extension of peninsular plateau. राजमहल हिल्स आएंगे वेस्ट बंगाल के साइड, छोटा नागपुर प्लेटू है. देन द मोर ईस्टर्न आर्म ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, जो हमने पढ़ा था मिखिर रेंगमा रेंज, है ना, मिखिर रेंगमा रेंज पढ़ा था हमने, सॉरी मिखिर रेंगमा आर्म पढ़ा था हमने. सो वो हमारा मेघालय ही है. और लास्ट वन इज दिल्ली. सो दिल्ली इज द पार्ट ऑफ ग्रेट प्लेन्स. दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर विल बी अवेलेबल देयर. One more point about sedimentary rocks. Sedimentary rocks are the only rocks which cover largest portion of Earth's crust. But if we will quote the total amount of sedimentary rocks on Earth, it is just mere over 5%. But the difference between two statements are, covering the Earth's crust, the largest amount is sedimentary rocks. But in comparison to the total amount of the earth, the sedimentary rocks are just covering the top portion of igneous as well as metamorphized rock. समझ में आ रही है आपको बात? ये अर्थ है, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इन सब के ऊपर. क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन के बाद बनी है. ब्रेक डाउन हुए, इरोजन हुए, डिपोजिशन हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बना है. सो अंदर तो यहाँ इग्नियस और मेटामॉर्फाइज्ड है, बट द largest that we can see on Earth's crust is sedimentary rocks. Understood? Then I have told you the rock cycle. Anything in these three types of rock, any type of rock can be changed to another type of rock. That is known as rock cycle. आपके पास स्क्रीन में लगा देता हूँ, जल्दी से देख लीजिए. And you have to draw this diagram in your notes. So hope so you love today's knowledgeable class. If you are loving this type of content, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद.